Good morning students. पहचान लिया? I am Mitali, your social science teacher, and today we are going to do chapter number 2 that we have started in earlier session. In that session we have discussed that earth is spherical in shape. मैंने आपको एक ग्लोब दिखाया था और उसमें बताया था कि the earth is spherical in shape and the above part is called north pole and the below part is called south pole. उसके अलावा we have discussed that there are many lines on the globe. हमने देखी थी कुछ horizontal lines थी, कुछ vertical lines थी, and these lines are known as longitudes and latitudes. And also I have told you that these lines are very important to locate the places on the globe. So let's continue about the latitudes. Today we will discuss the latitudes. So what are the latitudes? ये latitudes क्या होती हैं? Globe है, this is our globe. Suppose globe के ऊपर जो lines है, I have told you that that lines are called latitudes and longitudes. So today we will discuss what is latitude. तो latitude क्या होती है? See, I have written here east and I have written here west. So the lines that are running from east to west are called latitude. So these lines which I am drawing is called latitude. So as you know, हमारे ग्लोब की जो शेप है वो स्फेरिकल है. स्फेरिकल मीन बल्जिंग आउट फ्रॉम दी सेंटर. सेंटर में से बहुत ऐसे मोटा और ऊपर से पतला. सो नाउ गैस की सबसे ज्यादा बड़ी लैटिट्यूड कौन सा होगा जो बिल्कुल सेंटर से पास करेगा? सो जो बिल्कुल सेंटर से पास करता है दैट इज कॉल्ड इक्वेटर. इसको क्या बोलते हैं? इक्वेटर. Equator, this is the most important latitude. And why this equator is so important, you know? Because ये जो इक्वेटर है ये हमारे पूरे पूरी अर्थ को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है. इट डिवाइड्स द अर्थ इनटू टू इक्वल parts. One is this and second part is this. So the earth which is above the equator is called, because north pole is there, so this part is called northern hemisphere and this part is called southern hemisphere. इसको hemisphere क्यों बोलते हैं? Hemi का मतलब half. So this is full sphere and this equator is dividing into two equal parts. So this is my northern hemisphere and this is my southern hemisphere. Now as I told you कि हमारी places locate करने में help करते हैं, right? So as we live in our home, जब हम अपने घरों में रहते हैं, we all have some house numbers. हमारे सबके घरों का नंबर है, तो पता चल जाता है easily house number से कि कौन से घर में जाना है. As all these latitudes they have their own addresses. सबके पास अपना एड्रेस है अलग से. So how do we define them? We define them in degrees. We define them in degrees. So the equator which is at the center is 0 degree and northern hemisphere में we start 1 degree, 2 degree, 3 degree, 4 degree and 5 degree. So at every 1 degrees there are some latitudes. ऐसे ही बिल्कुल नीचे सेम 1 degree, 2 degree. अब मैम से पूछो मैम ये भी 1 degree, ये भी 1 degree, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? So the difference, इनको डिफरेंस एक दूसरे से अलग करने के लिए what we are doing is I am writing 1 degree N and 1 degree S. So what is this N and S? This is north and south. So this is my 1 degree north and this is my 1 degree south. ऐसे ही in all the latitudes we donate them with north and south. Clear? And कितनी total latitudes है हमारी अर्थ पे? दिस इज 0 डिग्री, राइट? दिस इज 1. उसके ऊपर कितने लैटिट्यूड्स हैं? वी हैव 90 इन दी नॉर्थ एंड 90 इन दी साउथ. सो दिस इज माय 1, दिस इज माय 90 एंड दिस इज माय 90. सो टोटल कितना हो गया? 181. So we have how many latitudes? We have 181 latitudes in total. Now I'll tell you the last feature of the latitude which is very important for you to know, that these latitudes are parallel to each other. Parallel नया word है. What does the parallel mean? Parallel means दो चीजें जो आपस में कभी भी टकराए नहीं. थोड़ा zoom करना.
So these two lines, see, are you able to see? These two lines are parallel. अब आप देखो, इसको मैं कहीं तक बढ़ा लूं या इसको मैं कहीं तक भी बढ़ा लूं, ये दोनों लाइंस आपस में एक दूसरे को कभी भी टच नहीं करेंगी. जस्ट लाइक सेम लैटिट्यूड इज देयर. अगर ये लैटिट्यूड पूरा एक सर्कल बनाएगा और ये लैटिट्यूड एक सर्कल बना रहा है, ये दोनों सर्कल एक दूसरे को कभी भी टच नहीं करेंगे. सो one feature of latitude is that these latitudes are parallel to each other. And the last feature of the day and the last topic of the day is next feature of the latitude. next feature क्या है, देखो, ये हमारी सबसे longest latitude होगी क्योंकि यहाँ पर अर्थ क्या है, सबसे ज्यादा मोटी है. तो अगर मैं ये वाला latitude देखूं तो ये सबसे बड़ा है. But as we are going up towards the pole, whether I'm going towards North Pole or the South Pole, the size of the latitude is decreasing. देखो यहाँ पर कितना छोटा latitude बना है और यहाँ देखो ऐसे ही नीचे. This is my 89 degree क्योंकि total तो 90 degrees and this is my 90 degree. Suppose this is my 89 degree, so it is very much smaller than this. So the last feature of the latitude is the size of the or the length of the latitude decrease as we move towards the poles. Clear to everyone? Thank you.